Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and healthy at your homes. Today we will start chapter number 7. Its second part. We will study today part number 2 of chapter 7 from your book First Flight. And your chapter name is Coorg. Coorg is a place. So tell me, which city is famous as a coffee country? Which city is famous as a coffee country? It is Coorg. Coorg or Kodagu. Its another name is Kodagu. Coorg or Kodagu is famous for as a coffee country. Which city is famous for its rainforest and species? Which city is famous for rainforest and species? It is also Coorg. Coorg is famous for rainforest and species. Okay, where is the city Coorg situated in our India? In our India, Coorg is situated in the city Karnataka, in the state Karnataka. Karnataka's part of Coorg and Bangalore district in Bangalore. So to know about this city, this area, what is famous for in this city. So to know more about this chapter, let's read this chapter. Hello, this is your chapter, children. This is your chapter number 7 and part 2, Coorg. So let's read about Coorg. Coorg is a coffee country famous for its rainforest and species. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of good. So ये जो एरिया है कहाँ पर है? मैसूर. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. एंड पीस ऑफ हेवन, इसको क्या बोला गया है? पीस ऑफ हेवन. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Coorg or Kodagu, its another name is Kodagu, the smallest district of Karnataka. एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का. इज होम टू एवरग्रीन रेनफॉरेस्ट स्पेसीज एंड कॉफी प्लांटेशन. ये यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्रो? रेन फॉरेस्ट भी आते हैं, स्पेसीज भी उगाए जाते हैं एंड कॉफ़ी प्लांटेशन फेमस है कुर्ग. ड्यूरिंग द मानसून इट प्योर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च. ये सीज़न जो है इनके आगे सितंबर से लेके कंटिन्यू टिल मार्च तक चलता है. द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स. द एयर ब्रेथ्स ऑफ एवोगोरेटिंग कॉफी and coffee estates and colonial bungalows stand tucked under these canopies in prime corner. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek and Arabic descent. इनकी जो पीपल होते हैं कुर्ग के वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट से होते हैं. एज वन स्टोरी गोज, एक स्टोरी भी है इसके बारे में. अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ. जब अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रही थी अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर. जब वहां पर वो सेटल हुई, व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, तो वो इम्प्रैक्टिकल बन गए. दीज पीपल मैरिड एमंगस द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मैरिटल ट्रेडिशन. मार्शियल ट्रेडिशन से इनके कल्चर जो है डिफरेंट होते हैं. मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat. इनका क्या होता है? ये पहनते हैं जस्ट लाइक दैट लॉन्ग ब्लैक कोट. ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस, ये लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं एंड विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट
born by the कोडाबस। कोडाबस उनके वहाँ के रहने वाले लोगों को बोला जाता है। एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट भी उनकी वेस्ट में होती है, जस्ट लाइक दिस, सी दिस, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. Kurgi homes have a traditional of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army. कुर्ग का रेजिमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड होता है इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा थे पहले, फर्स्ट चीफ जनरल वॉज द कुर्गी, वो भी कुर्गी थे। इवन नाउ कोडाबस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू carry firearms without a license. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. The most laid-back individual become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in the region are a favorite with trekkers. Birds, bees, and butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside from wild elephants. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargdham, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe. Is a bonus. The monks in red, ochre, and yellow robes are among us the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India, right here in Kurg. So this is a part of heaven. It is Kurg is also called a part of heaven and the living heart and soul of India. So have you understood this chapter? If you have any doubt, read this chapter once or twice. This is your homework. Write down. You have to write down in your English 1 notebook. Write a short paragraph on the lifestyle of Kurg's pupil. कुर्गीज जो होते हैं उनके लाइफ स्टाइल पर आपको 1 शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.